Okay, so pigeonhole principle. Right? Pigeonhole principle is it's a the theory part is very basic, right? So in this pigeonhole principle, we have to study right the theorem on this. The three theorems are there in the pigeonhole principle, right? And the use of pigeonhole principle is a little bit different. And moreover, the application part is totally different. And in the graph theory, we have to consider this pigeonhole principle, right? So the graph theory is also be like it's coming into this chapter. And graph theory, the most important part is bipyrite graph, right? So in those bipyrite graph, we have to use the pigeonholes, right? So first pigeonhole principle is the basic pigeonhole principle. It's if n plus 1 pigeon enters an pigeonhole where n belongs to positive integers, then there must be at least one hole having more than one piece. It's a basic, right? Obviously, right? In the coloring, सर when n is greater than क्या है वो क्या लिखा है n belongs to positive integers. When n belongs to positive integers. Right? This is the first basic flat principle, right? We have 10 students, right? And we have 11 chocolates and everyone has to get at least one. एक स्टूडेंट तो होगा जिसको एक से अधिक चॉकलेट्स मिलेंगे तो ऑब्वियसली राइट 11 and 10 में डायरेक्टली रिलेशन राइट so first second is if I'm saying theorem 2 or principle 2 is m plus 1 pigeon enters n pigeonhole, then there must be one hole in the like having at least m by n, the integral part plus 1 is right. Again, a basic simple thing. 21, right? Pigeon enters in 10 pigeonholes, right? एक पिजन होगा जिसमें 3 तो होने ही चाहिए, राइट? मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 21 पिजन्स हैं, राइट? एंड 10 पिजन होल्स, ये पिजन होल्स मेरे पास गए हैं 10 एंड हर एक में मैंने 20+1 में पहले सब में 2 दे दिया। ऑब्वियसली बात है ये टोटल मेरे पास 20 होगा, right? This is total number is 20 and now I have to fill one more. So if I have to fill one more in any of these, so 100% I'm getting more than 2 in this. So at least 3 in one of this. But these cases are for finite number, right? These cases are for finite number, but this we can also use for infinite numbers, right? When
infinity many elements are partitioned into finitely many sets, then there must be at least one set contain, इसके क्वेश्चंस हम लोग को अलग से करने पड़ेंगे ना, infinitely many elements. So there's a relation between finite and infinite, right? So flat the basic one. So for these few course, like few very basic questions first we have to do, then we'll go for the use of this, right? First, most basic question on this is, among 30 person, there are two born in the same month. Is this okay, everyone? अब मेरे को केवल ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, दिस इज द फ्लैट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन. The important thing is you have to understand exactly which one is the pigeon and which one is the pigeonhole, right? So from the basic question, if you are able to understand exactly what you have to use, right, which one is a pigeon, which one is a pigeonhole, so that will be always easier for you to go for a question that's like that could be थोड़ी like spicy wali questions, right? So we have 1, 2, 3, 12 months are there, right? And these 12 months, right, we have to put the person. I'm putting in every month, right? Every month, just I'm putting a person, right? Okay. So its total number is 12, and plus one person can go anywhere in between this. Right. So that's it. Right. So what is pigeon? What is pigeonhole in this case? Person and months. Sir, person Person and month. Right. I hope everyone is understanding this. Now, in a, like this is the first. Now, just the question, the second question on this, when you have to just consider which is pigeon, which is pigeonholes, and what are the numbers, right? That's it. Second, if you have 10 black socks and 10 blue socks in a drawer, and you want to find a match, right? How many socks be put? Perfectly very simple question. Sir, 11. Not bad. सर See, भेजा आप. हाँ बेटा. See, सर फ्री होगा ना? see, the socks we have to consider, right? ये black वाले, ये blue वाले, right? Black socks and blue socks, right?
all the socks of black color are like left, right wale socks we are not considering. We are considering all the socks, right? Socks we are not considering as the socks are left one and right one, right? आजकल मतलब बहुत सारे socks होते हैं like that's right is different, left is different, and वो लिखा भी रहता है. But यहाँ पर जो क्वेश्चन का जो वर्किंग है या डिमांड है कि all the black socks are here only and all the blue socks are here only. So how many socks we have to consider, right? So what I am saying, like we have, right? We have It's three. black, blue. So one of this, one of this. So plus one now, this has to go either in this one or this one. So the third socks will decide like you have all the socks. I hope this is clear, right? Yes, sir. Most basic thing, right? Like if you like just you are starting your pigeonhole principle now, so these questions will work right now. But the label of the next level I'm going for, right? First 10 question will be the most easiest one, right? When you will understand exactly what it is, then we'll go further. But see the next one. Given 12 integers, prove that two of them can be chosen whose difference is divisible by 11. Now, थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा है, simple, but now just you have to consider which one is pigeon, which one is pigeonhole, and how to solve this. Very good. सर इंटीजर्स में कोई रिलेशन नहीं है क्या? कोई भी इंटीजर बेटा, कोई भी इंटीजर. आपको मोस्ट वो वाले केसेस लेने हैं जहां पर यू विल बी एबल टू कंसिडर ऑल द नंबर्स. Should I start? Yes, sir. See. सर होल्स को 0 mod 11, 1 mod 11, 2 mod 11 करके करेंगे तो 11 पूरा अलग हो सकता है और एक सेम में जाएगा. उसके बाद सपोज 11 मॉड ऑलरेडी डिफरेंट है तो एक हम लोग का बाकी रहता है, वो कोई भी 11 होल्स में जा सकता है. Wow, very good. So 11 holes or 12 integers? Very good. Right. So we have 11 holes. So I can say this is the question of mod 11. Right. This is the question of mod 11. Mod 11 means, right, if I'm dividing any of like the numbers are given, if you are saying that two numbers are same, right? If you are taking two numbers are same, so 100% the difference will be two numbers are same with mod 11. So 100% the difference is coming as 0, right? If I'm saying that this is 11 lambda plus 3 and second number is again 11 lambda plus 3, right? And lambda is anything, right? So if I'll take the difference of this, so 3 will be cancelling out. So this number will be divided by 11. So if the numbers having same mod, so 100% we are getting the answer. So now we have to consider, okay, let's suppose we are taking the numbers, if the number when divided by 11, giving the remainder either 1, 0, 2, 3, up to 10. So how many numbers we have used in this? 11. Very good. Total is 11 we have already used, and one number is there, right? And this number may be going to right any. So this number, if this is coming as 0, right? Both the numbers are divisible by 11, 1, then obviously the difference will be divisible by, and anywhere 3 or 7 or 10, the number will be divisible.
So the pigeons are, right, pigeons are the integers and pigeonholes are the mod 11, the numbers. Is this okay? Direct, simple question again, right? But see the use, matlab, these type of question you will get in different language. That's it. That's called the RMO, right? Iron. Fourth one. Now, see this. Given 8 different natural numbers, none greater than 15, prove that at least 3 pairs of them have the same positive difference. Now, ये थोड़ा सा अलग होगा, एक स्टेप आगे बढ़ेगा. Take your time. Question is clear? Given 8 different natural numbers, none greater than 15, prove that at least 3 pair of them have the same positive difference. Have the same positive difference. So done. Very good, Krishit. Very good. सर हो गया. सर व्हाट्सएप पे आपको सोल्यूशन भेजनी है क्या? चलेगा बेटा, ऐसे ही डिस्कस कर लेंगे. Should I start now? स्टार्ट कर लें. Yes, sir. See. See the solution. Given 8 different natural numbers, none of them greater than 15. So, right, all the numbers are less than 15, right? Prove that at least 12 में देखता हूं. पहले तो 8 different natural numbers हैं and, right, all are less than 15, right? So maximum मैं कहाँ तक जा सकता हूं, that we have to see. Right, prove that at least 3 pairs of them have the same positive difference, right? So 2 लोगों का हो गया है, right? तो पहले ये कंसिडर करता हूं. So first thing what we have to take is the how many pairs we can take from this, right? So 8 different natural numbers are there, right? And pairs means दो मेरे को लेते जाने हैं. So I can take 8C2 as a pairs. So 8C2 is total number of pairs. What we can consider is 8C2. So what number is coming? क्योंकि number is very important part, right? क्योंकि मेरे 20. उसी में कंसिडर करने हैं. तो what number I'm getting? 28. 28, right? 20. Up 28 numbers we have, right? 28 pairs we have.
right? So in these 28 pairs, we have to put these pairs in such a way that three of the pairs must have the same difference, right? So now this is the first part, how many pairs we have, right? Now, second thing, what I have to consider is the difference, right? What differences I have in the numbers, right? So we take like that, right? So none of the number is greater than 15 and natural numbers are there. So, right, I'm starting with 1, 2, 3, and maximum I can go to 15, right? And all are the different numbers, right? So differences बोला ना तो natural number पे max to max से 14 तक जा 14 तक सकते हैं। जाएंगे। बस 14 तक, 15 में हो ही नहीं सकता। नन ऑफ ग्रेटर देन 15, जो भी हमारे पास उससे बड़ा सर नंबर 15 में क्यों नहीं हो सकता? आते हैं बेटा, वो कंफ्यूज ये लोग हो रहे हैं दूसरी चीज पर। तो अब डिफरेंसेस की मैं बात कर रहा हूँ, डिफरेंसेस मेरे पास क्या क्या हो सकता है, राइट? अगर डिफरेंसेस की मैं बात करूं, ऑल द नंबर्स आर डिफरेंट, तो मेरे पास 1 डिफरेंस हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। मैक्सिमम डिफरेंस जो जा सकते हैं वो 14 तक जा सकते हैं। डिफरेंसेस जो मैक्सिमम मेरे पास जा सकते हैं वो 14 तक, लाइक इट कैन गो अप टू 14, राइट? अब मेरे पास ये डिफरेंस हैं, इसके ब्लॉक्स बने, राइट? एंड मेरे पास टोटल नंबर है 28, राइट? एंड मेरे को अब ये 28 पेयर्स जो हैं, 28 पेयर्स को इस डिफरेंस में पुट करने हैं। एंड वी हैव टू प्रूव दिस कि ये वाले नंबर्स जब मैं ये डिफरेंसेस में वी हैव टू पुट द डिफरेंसेस ऑन द, वी हैव टू like distribute these 28 pairs into this numbers, तो मेरे पास कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा होगा कि आई एम गेटिंग 3 pairs in one differences, right? So this is very simple now, right? So see, थोड़ा सा सेपरेट करके दिखाता हूं। So we have 1, we have 1, 2, 3, 4, up to 14. But we know that, right? 28 pairs we have to consider, right? And इसके पहले 13 पूछूं, right? And 28 pairs we have to put in this. सबसे इंपॉर्टेंट बात जो केवल एक बार दिमाग में आते ही क्वेश्चन खत्म, क्या? See, the difference 14 is only 1, right? Now we have 27 pairs that we have to put in these 13, right? And 27 numbers are there and we have to put in these 13. So what I'm doing, I'm saying ki, okay, each and every differences will take 2 to 2 number and 1 number is left in this. So this number could 100%, this number could go in any of the differences, and this is giving me the answer. Is this okay? Yes, sir. Okay, everyone, right? So the most important part in this was the last number giving you the difference 14, and that possible with only one number, not more than that, right? And rest you are getting there. Anyone want to ask? Akshay, okay? Yes, sir. Aryan, okay? Yes, sir. Purunjay, Yes, sir. okay? Gayatri, okay? Jayesh, Yeah. okay? Now, right? So these are the questions, like these are called the good question. I don't know, but these are the simple question, simplest question, but we have to consider like it has to go in that way, right? See the next one. Prove that for any given 50 possible positive numbers or 50 positive integers,
it is always possible to find out 4 integer a1, a2, a3, a4 such that a2 minus a1 and a3 minus a4 is divisible by 2009. Simple question, but please, you have to consider सर this मल्टीप्लाई हो रहा है क्या A2 माइनस A1 A3 माइनस A4? multiplying by this. सर ये 4 नंबर डिस्टिंक्ट होने चाहिए। डिस्टिंक्ट, अगर डिस्टिंक्ट नहीं होंगे तो आपका काम तो ऐसे ही बन गया। 0 is always divisible. ये प्रत्युष कुछ शरीफ सा कैसे दिख रहा है? हाँ, व्हाट चेंज? सर ट्रिम कर लिया। ओ, वही मैं बोला। गुड गुड गुड। मेरे को लगा गरबा का कल का तैयारी चल रहा है तेरा। सर इस साल नहीं हो पाएगा। Very good question, simple one, but obviously, right? You have to make a plan for this, right? Very simple question, but you have to make plan as I said, right? Make a plan for this, right? ये फ्री के नंबर होते हैं। पिजन होल मीन्स फ्री का नंबर, राइट? बट ये कंसिडर, एक बार दिमाग में बैठना कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। हाँ, दीज आर वेरी 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 सिंपल कंसेप्ट।
Kriship, very good. Kriship, very good. Now you have to make plan, beta. Now you can relate with the questions what we have already done. Very good, Utkarsh. Very good, beta. आर्यन होना चाहिए, सिंपल है ये. हाँ सर, मैं ऑलमोस्ट एक अप्रोच ढूंढ रहा हूँ अभी. हो गया ऑलमोस्ट. अनुष्का, सिंपल वन. संजना. सर आपको व्हाट्सएप पे भेजा सॉल्यूशन. वेरी गुड. व्हाट्सएप पे. Okay. वेरी गुड, वेरी गुड. सही है. अच्छा जी, वेरी गुड बेटा. कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, यू कांट बिलीव दिस. दीज आर कॉल्ड अच्छा क्वेश्चन. आई डोंट नो. Done, everyone. Should I start? Yes, sir. यस सर. Right. This is one of the simplest question already you have done for 11. Right. So this number, like what we have considered is 2000 of 9. When you'll see this 2009 is nothing but 49 into 41. Right. So for 41, we have a like very good arrangement of numbers, right? बहुत सारे numbers हैं. Right. For 41, like we can go for mod 41 as we have earlier done for 11. Right. The number is mod 41, 0, 1, 2, 3, up to 41. Now you have, right, 42 numbers you have already used and 8 numbers you have. So 100% we are able to put lot many numbers in this case, right? So we can consider for 41, same as for mod 49, right? The 49, right? We know that number will start from 0, 1, 2, up to 48. Now, one number is left, and this number has to go in any one of the modulus. So 100% we are getting mod 49. So this number must be divisible by, right? We are able to find the number for mod 49 as well as for 41. So 100% we can ensure that we are able to find the number that's divisible by 41 as well as 49. I hope सभी ने यही अप्रोच लगाए होंगे एंड सबके सही. सर मैंने वो अप्रोच करने वाला था, लेकिन जो मैं कंफ्यूज हो गया था कि 50 रैंडम इंटीजर्स हो सकते हैं और 2009 का दूसरे दूसरे भी प्रोडक्ट्स आ रहे थे, तो इसीलिए थोड़ा कंफ्यूज हुआ था. Okay, now understand? ठीक है ना? Okay, now to more on this, right? मैंने जब बोला था कि शुरुआत के कुछ बेसिक क्वेश्चंस, right? 7, 8. Fifteen students gathered 100 nuts. Prove that some pair
of boys gathered an identical number of nuts. ख्याल रखना, ये जितने क्वेश्चन अभी जो मैं करवा रहा हूं ना, ये बेस बिल्डिंग है, राइट? यही सब रेफरेंस मैं बाद में दूंगा कि ऑलरेडी डन दैट क्वेश्चन, सो यू हैव टू अप्लाई दोस, राइट? तो वो 2-3 स्टेप्स में लगने जाएंगे, राइट? सो गो फॉर दिस. सर कितने पेयर को प्रूफ करना मतलब? 15 स्टूडेंट गैदर्ड 100 nuts, सम पेयर. सर सम मतलब कितने हैं, दो तीन? एटलीस्ट 2 भी हो गया तो चल गया, 3 हो गया तो बहुत अच्छी बात है. सर 2 पेयर्स चलेगा क्या? हम्म. सर भेज दिया आपको। हम्म. वेरी गुड. वाह अक्षत, तुमने लिखा ये, वेरी गुड. यस सर। वेरी गुड. ऋषभ, डन. वेरी गुड. यस सर। वेरी गुड बेटा. सर डन। वेरी गुड. Wow, very good, very good. See, like you all having the different approach on this, right? बहुत अलग-अलग हो सकते हैं. Like just you have to say कि at least 2% are there, right? They are having the same numbers, right? Let's start. सबके attempt हो गए? यस सर। यस सर। सर अजम्पशन कॉन्ट्राडिक्शन से कर सकते हैं। सर क्या? अज्यूम कॉन्ट्राडिक्ट से कर सकते हैं ना इसे? कैसे बेटा बताएं? सर अज्यूम कर जैसे सबके पास अलग अलग नंबर ऑफ नट्स है। Very good. तो सर पहले तो स्टार्टिंग करेंगे तो अगर सबके पास अलग अलग नंबर ऑफ नट है तो 1 2 3 4 5 6, तो 15 स्टूडेंट्स है। तो हर एक स्टूडेंट के पास यानी मैक्सिमम जो है वो समेशन 1 to 15 या 0 to 14 तक जा सकता है। Okay. और फिर सर जो जो भी करे 0 to 14 करे तो वो मोर देन 100 जाएगा। फिर अगर हमें 13 माने तो 0 + 0 + 13, 13 में जाए तो 100 से कम आएगा। तो अगर हमने मोर देन वन बॉयज को आइडेंटिकल नंबर ऑफ नट्स का अज्यूम कर लिया है तो अच्छा, अगर हमने वन पेयर ऑफ बॉयज को सेम नंबर ऑफ नट्स यानी समझो 0 अज्यूम कर लिया तो भी हमें 91 आएगा। तो मोर देन वन पेयर ऑफ बॉयज को इक्वल नंबर ऑफ नट के लिए हमें कॉन्ट्राडिक्शन हमें मिल गया कि वी हैव टू फॉर नो पेयर और वन पेयर ऑफ स्टूडेंट वी आर नॉट गेटिंग 100 नट्स। सो
कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। सर मैंने सेम वे यूज किया, बस मैंने किया कि उस 13 समेशन में मैंने 13 होल्स बनाए थे जिसमें 15 पिजन्स थे, तो उसमें हो गया। मैंने थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। मैंने जैसा जयेश ने बोला, मैंने थोड़ा सा कंट्राडिक्शन भी रख दिया कि इफ ऑल हैविंग द difference, different numbers, then total number is coming as 105, but we have to collect 100. So obviously 105 is not possible, so few of the people having the same number of nuts. That's it, right? So in anyhow, okay everyone, यही approach है हम सबके। Yes, sir. Okay everyone, right? Sanjana, is this okay beta? Yes, sir. Okay. Now next, 10 students solve a total of 35 problems in a mass Olympiad paper, right? Each problem was solved by exactly one student. There is at least one student who solved exactly one problem at least one student who solved exactly two problems, and at least one student who solved exactly three problems prove that there is also at least one student who has solved at least five problems. Simple, but lots of information, so careful. Sir, done. Very good, Patrice. केवल words, words, words. That's it. You have to play with the words. सर डन। Aryan, you have sent this ना? वो पिछले वाले का था। हैंडराइटिंग बड़ा सुंदर लिखा है इस बार। गुड। सर आरएमओ के लिए तो करना पड़ेगा, गुड 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 गुड। कि ऐसे लग, क्योंकि ऐसे थॉट में डाला है कि अगर हैंडराइटिंग गलत है तो सपोज कर लो कि 5 मार्क कट। नाइस, मतलब इम्प्रेसिव। हैंडराइटिंग इज गुड, ये काफी नीट एंड क्लीन। दैट्स गुड।
सो ये प्रॉब्लम के बाद फिर हम लोग मैथमेटिकल आएंगे कि लाइक हाउ टू कंसिडर, राइट, यूज कहाँ कहाँ पर और होते हैं, राइट। तो ये फर्स्ट रेंज जो मैंने कहा था, एकदम बेसिक क्वेश्चन जिसमें अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि एग्जैक्टली क्या है क्वेश्चंस, क्या है पिजन होल। आई होप लाइक अभी तक तो लग रहा है बहुत लोगों के आंसर्स भी आ चुके हैं, तो ऑब्वियसली गुड। सर मैं व्हाट्सएप में सोल्यूशन भेज दूं? चलेगा बेटा? डन एवरीवन, स्टार्ट करें क्या? Yes, sir. सर एक मिनट। ओके ओके। सर भेज दिया। परफेक्ट, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, दैट्स इट। डन किसेल, Yes, sir. वेरी गुड। अक्षय, स्टार्ट करूं बेटा? सर भेज रहा हूँ सर। यस तो मैंने भेज सॉल्यूशन भेज दिए। वेरी गुड। 8 9 10, राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तीन स्टूडेंट तो मेरे फिक्स हो गए। these three are 1 2 and 3. These are fixed. One has solved one problem, second has solved two, and third has solved three. So 3 to 5 and 6, we have already solved 6 problems, and these 29 लेफ्ट। 29 question left, and these 29 question has to go in these sevens. 29, like minus 1 is, One and left. 28 1 Yes. लेफ्ट। सर वही क्या? very good. हाँ सर यही किया था। Direct question. But you'll see this, right? The language and all. One line is more than enough for this, right? But you have to just go through this, exactly how we have to write it down for this, right? And obviously 1, 2, and 3, these three numbers we have already solved. So we have total number of question left 28 plus 1. 28 will be distributed. In the extreme case, it will be distribution in 4 4 4 and plus 1. That's the reason this is also called as the box problem, right? Pearl's problem or pigeonhole method, right? And Distleach method is also, this is also called, right? So now, one step ahead of this, use. Where we have to use and how to use these concepts, right? In a mathematical way, in the number theory, or like we have to bound the numbers in different ways. The first theorem was given by Siskes, right? सॉरी अगर मेरे प्रोनाउंस थोड़े से गड़बड़ हो रहे हों, बट राइट। सो व्हाट ही सेड कि given a sequence of n square plus 1 distinct integers, either there is an increasing
subsequence of n plus 1 terms or a decreasing subsequence of n plus 1 form. Right? Let with the induction, what it's saying that let n is equal to 2. Right. So if you are writing this n is equal to 2, so what I'm getting, the total sequence is 2 square plus 1 means 5. And what we require 2 plus 1 is 3. 3 of them are either increasing or decreasing. So 5 numbers are given A1, A2, A3, A4, A5. Right. Let this increasing order is this one. So if we'll write A1, A2, A3, A4, and A5, right? So this is saying that, right, given sequence of 5 distinct integer, either there is an increasing subsequence of 3 terms or the decreasing subsequence of 3 terms. Right. So इसे यूज हम लोग करेंगे. So ख्याल रखना ये थ्योरम को. Right. First. Second of this is, like, this was given by Distridge, right? Richly principle, pigeonhole को ये भी नाम दिया जाता है. एंड उसने एक लिमिटेशन केस के साथ में काम किया. दैट वाज इफ n numbers have some s, then at least one of them must be at least s by n. थोड़ा लैंग्वेज थोड़े से राइट इसके ऐसे हैं जो है सिंपल सी बात, बट लाइक वी हैव टू जस्ट कंसिडर कि एग्जैक्टली क्या बोल रहा है सिंपल. यस कैसे सर वो एस बाई है ना. हाँ. So when we'll go with the extreme case, so what we are considering, let n numbers are given as A1, A2, A3 up to n, right? So in these cases, what I'm saying कि A1 must be less than s by n. Let's consider A2 must be less than s by n. राइट ये बोल रहा है कि कम से कम s by n होना चाहिए. तो व्हाट आई एम कंसिडरिंग कि चलो नहीं लेता, मैं लेता हूं कि A1 भी लेस देन s by n है, A2 भी लेस देन n by s by n है, अप टू an will be less than s by n. Right. If I'll add all the numbers, what I'm getting is A1 plus A2 plus A3 up to an is less than s by n times. Right. So what you are getting, A1 plus A2 up to an is less than s, but it is given as s. So what is the meaning of this? One of them has to be equal to at least. At equal to or greater than this. Right. So this is called the contradiction. Like in the multiplication and addition, both the form will get that. In addition, you got कि s by n होने चाहिए जो, तो multiplication में क्या होने चाहिए थे, product में क्या होने चाहिए थे? nth root of s. Very good. 1 by n. Right. Every number for product. Right, for product. सर Right. आप एक तो ऊपर कर लोगे थोड़ा सा. हाँ. Sorry, just note down. प्रोडक्ट वाले को भी प्रूव करके दिखाओगे, ठीक है?
just multiply. We have to multiply the numbers. 4 है, एक और जस्ट आता हूं। फिर हम लोग चलेंगे सेकंड राउंड के क्वेश्चन पे। एज आई सेड, हम लोग 4 राउंड के क्वेश्चन इसके करेंगे। ये फर्स्ट राउंड है जिसमें अंडरस्टैंडिंग हमने बनाई। अब एक थ्योरी को थोड़ा सा ऊपर मैंने बढ़ाया, राइट। अब इस पर बेस हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जो सेकंड राउंड रहेगा, जिसमें थोड़े से वर्किंग के बाद में यू विल बी एबल टू अप्लाई पिजन होल। थर्ड राउंड जब हम लोग पहुंचेंगे, उसमें पहले हमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन के कुछ काउंटिंग लगाने पड़ेंगे, देन वी हैव टू गो फॉर पिजन होल। फोर्थ राउंड हमारे पास होगा जिसपे हम लोग ग्राफ थ्योरी को यूज करना हमारे लिए, एक ग्राफ थ्योरी और इनको दोनों को यूज करने पड़ेंगे। सो इसमें मेरे ख्याल से हम लोग आराम से पकड़ सकते हैं क्वेश्चन विदाउट एनी फेल। सर हो गया। Sure. And the next of this is, let B1, B2, B3 up to Bn belongs to positive integers. If B1 plus B2 plus B3 up to Bn minus n plus 1 objects are distributed into n boxes, then either the first box contain B1 objects or second box contain B2 or nth box contain Bn objects। ये सर ये क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं बेटा, ये जो थ्योरी अभी बताया ना, उसी का एक लाइक बेसिक थ्योरी को बढ़ा दिया मैंने। जैसे मेरे जो बैग्स थे वही रखता हूँ, A1 A2 A3 अप टू A। अभी समझ में आ जाएगा आराम से, जो आपने किया है वही है। लेट दिस इज, आई एम सेइंग कि दिस कंटेन द नंबर ऑफ बॉल्स लेस देन B1, so like it's B1 minus 1, this is B2 minus 1, this is B3 minus 1, this is Bn minus 1. If again we'll add this number, right, so what I'm getting, A1 plus A2 up to An is less than equal to B1 plus B2 up to Bn minus n, and like this is less than equal to what, B1 plus B2 up to Bn minus n plus 1. सेम बात हो गई, आपने ऊपर कंसिडर किया था। सर एटलीस्ट ना होगा हर केस में। ये होना चाहिए। एटलीस्ट तो ये जो हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चंस किए, इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन थे हमारे पास, राइट। और उसी को वर्क करने के अलग अलग तरीके हम लोगों ने राइट यहाँ पर कंसिडर किया। नाउ अब ये क्वेश्चन के थ्रू वी कैन सी कि लाइक कैसे यूज हो रहे हैं क्वेश्चंस। पे ठीक है, सी लेट ये
क्वेश्चन मैं आर्थर एंजल से करवा रहा हूँ, राइट। आर्थर एंजल का दिस इज वेरी फेमस क्वेश्चन। A1, A2, A3 up to AN be n not necessarily distinct integers, then there always exists a subset of these numbers with some divisible by n. Okay, चलो let's try. क्वेश्चन है। क्या बेटा, क्या आर्यन? सर यही पूरा क्वेश्चन को प्रूफ करना है फिर। अब क्वेश्चन एज आई सेड ना, थोड़ा सा लाइक ऐसा आएगा जिसमें जस्ट वी हैव टू फर्स्ट कंसिडर देन वी हैव टू सॉल्व। सिंपल है बट लाइक लैंग्वेज फंसा रहा है, लैंग्वेज को समझना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं बस। वेरी गुड कृषित, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। ऑब्वियसली मॉड एन पर काम करना है हम लोग को। मॉड एन पर क्या काम किया जाए उसको पहले हम लोग को एक स्टेप बढ़ा के लाना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे इसमें? 2 to the power n. हाँ, इफ वी आर नॉट कंसिडरिंग द नल सेट को हटा दो, टू द पावर n -1 इतने हैं। बट उनमें मेरे को क्या करना है कि लाइक वी हैव टू सेलेक्ट n ऑफ दिस, राइट। n हमारे पास है, उससे n से डिविजिबल होना चाहिए, राइट। सम डिविजिबल बाई n। तो मेरे को पूरे नहीं लेने हैं, मेरे को इतने ही चाहिए जिस पर मेरा काम बन जाए। नॉट बैड। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम था। ट्राई। मैं स्टार्ट करूं क्या? नो सर। यू हैव 3 minutes।
3 मिनट का time, उसके बाद मैं करता सर आई थिंक हो गया. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. सेंड मी द सॉल्यूशन प्लीज. ओके सर. हूँ. शुड आई स्टार्ट? लास्ट 1 मिनट. तो थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें. क्या आप थोड़ा मेरे को भेजो एक बार, प्लीज सेंड. कैन यू सेंड दिस? हो जाएगा? सर मैं चार्ट में लिख दूँ. चलेगा. चले, आइडिया लिखो अपनी. नॉट बैड. हाँ, थॉट प्रोसेस को अगर ठीक करे तो यहाँ से काम बना सकता हूँ, बना लूंगा. रुको, मैं कोशिश करता हूँ. फ्रॉम दिस ओनली आई विल सी. सी. So in this, right, we have lot many pairs, right? But we have to consider this is divisible by n, right? So this is divisible by n. So obviously we have to take n sets and subsets. As I said, we are not taking any of this a1, a1 plus a2, a1 plus a2 plus a3, up to a1 plus a2 plus a3 up to n, right? These are the sets, right? Consider this is
S1, this is S2, this is S3 sum, and this is Sn, right? Case first, right? If any of these number having the sum divisible by n, तो mod n मैंने वही किया था, नॉट डिविजिबल बाय n का मैंने किया है। मेरे को वही देखना है, केस टू नॉट डिविजिबल हो तब के लिए क्या होंगे, राइट? सो वी हैव n सेट्स, राइट? ध्यान से सुनना बात को। वी हैव n numbers, n set S1, S2, S3 up to, right? So let consider two of the sets, right? One is SP, other is SQ, right? For any Q greater than P, I can, right, assume that SQ greater than SP, right? Sum up to Q terms, right? एंड मेरे पास बहुत सारे सेट्स में हैं, राइट? और भी बहुत सारे हैं नंबर्स, राइट? वी हैव टू कंसिडर कि दो ऐसे नंबर्स मेरे को मिल जाए बस, राइट? सो इफ आई एम कंसिडरिंग कि S1, S2, S3 और उसमें से Sn जो भी मैंने दिया है, राइट? सो इफ आई एम डिवाइडिंग दिस बाई n, तो अप टू n-1 आई एम गेटिंग द रिमाइंडर एज 1, 2, 3 अप टू n-1, राइट? ये मेरे को मिल गया। अब मेरे को कहीं ना कहीं मेरे सेट में एक Sn कोई ऐसा मिल जाए, राइट, जो मैं कहीं ना कहीं ये दिखा पाऊं कि वो रिमाइंडर जो 1, 2, 3, 4 है, इतना ही रिमाइंडर वहां पर भी उसका भी आ रहा। कैन आई कंसिडर दिस? हो सकता है। अगर ऐसा कुछ मिल जाए तो एक बहुत मैजिक होगा। पहले यहां तक सबको ठीक है? अप टू दिस स्टेप इज दिस ओके एवरीवन? यहां तक के स्टेप में कोई पूछना चाहोगे? हमने यहाँ पर केस 2 में कंसिडर है कि it's not divisible by n, so remainder will be 1, 2, 3 up to n-1. So we have taken up to any of these 1, S1, S2, S3 up to Sn-1. The remainders are 1, 2, 3 up to n-1. Now just we are considering कि कहीं से मेरे पास एक Sn वाला जो है ऐसा आ जाए, राइट? ऑब्वियस सी बात है, इफ these all are not divisible by n, तो ये कहीं ना कहीं एक तो नंबर ऐसा आएगा जो रिमाइंडर 1 या 2 या 3 इसी में से कोई ना कोई एक रिमाइंडर रखा होगा। सो इफ आई एम कंसिडरिंग कि SQ greater than SP, right, for any Q greater than P, right, and both having the same remainder, so SQ minus SP, right, if both having the same remainder, so I can say that this will be equivalent to 0 mod n. Is this okay? ये तो होना ही चाहिए फिर, दोनों के रिमाइंडर अगर सेम है, राइट, तो 100% आई कैन से कि mod will be 0. Is this okay? Yes. यहां तक ठीक है? मैं सोल्यूशन के बाद अपना वर्किंग भेज सकता हूँ। जस्ट अ मिनट बेटा, मैं इसको लास्ट कर दूं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। बट व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस SQ minus SP? What is the meaning of this? SQ minus SP is nothing but A P plus 1 plus A P plus 2 up to AQ, बोल सकता हूं? Yes. With AP plus 1, AP plus 2 plus up to AQ, ये जो मेरे पास नंबर्स आ रहे हैं, राइट, ये कोई ना कोई मेरे पास S1, S2, S3 जो 2 to the power n-1 था, उसी में से कोई ना कोई एक SX है मेरे पास। मतलब ये एक ऐसा नंबर मेरे पास इसी सेट में प्रेजेंट है जिसमें आई कैन सी कि वो भी मेरे पास 0 दे रहा है mod n के लिए। सो वी हैव, इज दिस ओके? यस ये सर। समझ में आई क्या हुआ आखिरी का केस? कि फर्स्ट वी हैव कंसिडर कि दिस इज केस 1, वो तो बड़ा सिंपल सा था, बढ़ा दिया उसे। केस 2 वी आर कंसिडरिंग कि मेरे पास दो ऐसे सेट्स होंगे, कोई भी मेरे पास पूरे के पूरे सेट्स में दो ऐसे हैं, एक Q greater than P के लिए, तो SQ greater than SP, तो दोनों के सेम रिमाइंडर हो जाए। दोनों के सेम रिमाइंडर मींस SQ minus SP, right? If both having the same remainder means SQ minus SP will be congruent to 0 mod n, right? Congruent to 0 mod n, but SQ minus SP is one of the SX that must be in our set only. So, like we are always getting a number, right? SP minus SQ mod 0, like this is mod n, like that will be 0. So, this is the number is always there. So, hence,
proof. Okay, Aryan, Joseph, okay. यस सर Yes. सर मैं अपना वर्किंग भेजू Beta, please. Pratyush, okay. Utkarsh, यस सर। Anusha, okay, बेटा. Zoom out कर सकते हो क्या सर जूम आउट ठीक है? यस सर थैंक यू सर मैंने भेज दिया Not bad. सही है. Good. थैंक यू सर Okay. Yes, sir. राइट, कुछ क्वेश्चंस मैं और आप लोगों को भी सेंड करूंगा. राइट, तो वो मैं सेंड करूंगा. और लेक्चर नोट्स, ओलंपियाड लेक्चर नोट्स से कुछ क्वेश्चन सेंड करूंगा आप लोगों को. राइट, एक क्वेश्चन करने के बाद राइट आई विल सेंड इट टू यू. प्रूव दैट इन द 2009, याद है 2009 का हमने क्वेश्चन किया था. एक और क्वेश्चन. 49. 2009 numbers 1, 11, 1, 1, 1 up to 1, 1, 1, 1, 1, 2009 times, right? There is one that is divisible by 2000. ये अच्छा, ये नंबर से भी हो सकते हैं. लाइक वी कैन राइट प्रूव दिस बाय द सिंपली फॉर्मा से भी सॉल्व हो सकते हैं. बट वी आर नॉट गोइंग देयर. राइट, कोशिश करना है कि पिजन होल कैसे अप्लाई. एंड डिविजिबिलिटी के जो केसेस हमने किए हैं वो भी आपके पास है. टेक योर टाइम. सर हम ये मॉड से कर सकते हैं ना? हाँ बेटा, मॉड तो लगाना पड़ेगा. जो लास्ट क्वेश्चन किया वो आपका बेस है, उसको बेस बना के कोशिश करेंगे. लास्ट क्वेश्चन इज द बेस, उसी पर से क्वेश्चन ये आराम से निकल जाएंगे.
राइट। यहाँ पर भी वही जाएंगे, केस 1 and 2. केस 1, एनी ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2009, hence proved. Case 2, let the number is not divisible by 2009, right, and none of the number is divisible by 2000. डिफरेंस से कर सकते हैं क्या? हाँ उसके बाद डिफरेंस लेके कर सकते हैं क्या? हाँ, मतलब विल कंसिडर दैट, राइट, नन ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय, तो एस पी जैसे हमने लास्ट लिया था, एंड एस क्यू, क्यू ग्रेटर देन पी, एस पी इज 1 1 1 1 1 1 p times, SQ is 1 1 1 1 1 1 1 Q times. SQ minus SP. What is this? Huh? One, Any one, and about 2009. P P टाइम minus into 1000. 10 to the power P na. हाँ सही 10 to the power p. Now we know that, right? SP minus Q. इसे फिर से मैंने SX assume किया. So what about this SX? 1 1 1 1 1. This is P minus Q times into 10 to the power P. We know that if we have to divide this SX by 2009, so 2009 and this, right, is 1, right? ये दोनों हमेशा हमेशा ही रहेंगे ना, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है नहीं. मीन्स 100% इफ SX इज डिविजिबल, राइट, यही मैं अगर कंसिडर करते हुए चल रहा हूँ, इज दिस इज डिविजिबल, क्योंकि दोनों के सेम रिमाइंडर है, राइट. आई एम हैविंग द सेम रिमाइंडर, नंबर्स हमारे पास एक ना एक नंबर वैसा रहेगा ही. सो आई कैन से कि 2009 मस्ट डिवाइड्स 1 1 1 1 1 1 P minus Q. Is this okay? But this is the contradiction. क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? it is not divisible. सर मैं यही बोल रहा था कि डिफरेंस से कर सकते हैं. ये मेन है 10 to the power p वाला, क्योंकि 10 to the power p और 2009 का कोई है नहीं, तो 1 1 more 2000 लास्ट को सारे रखेंगे. सेम क्वेश्चन ना, उसको पूछने का 2009 pigeon 2009 holes. क्लियर एवरीवन? सो ये है सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा एक स्टेप हमने बढ़ा दिया. शुरुआत में थोड़े डिस्कम्फर्ट रहेंगे, बट आई नो कि इसके बाद अब कि हाँ सर ऐसा क्वेश्चन तो आराम से होने, राइट. सो लाइक नेक्स्ट वाले लेक्चर में, राइट, हम लोग इससे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैं अधिक नहीं, 10 क्वेश्चन के आसपास अभी आप लोग को भेजूंगा, नॉट 10 to 12 क्वेश्चन, राइट. केवल उतने ही आपको करने हैं 10 सेट, राइट. फिर लाइक देखता हूं कि थोड़ा सा और इस पर हम लोग कैसे वर्क कर पाए. ये 2009 वाला जो क्वेश्चन है ना, दोनों इसी बुक से थे. जो 2009 वाला जो एक पहले दिया था मैंने, A1 A2 A3 वाले, वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम बुक से थे. लेक्चर नोट्स जो है, हाँ, उसी से दोनों थे, और मेरे को बड़ा प्यारा क्वेश्चन लगता है ये, तो मैंने बोला चलो साथ में करते हैं, अच्छा लगेगा, राइट. तो चलो एवरीवन, बाय बाय ना, फिर मिलता हूँ जल्दी से, राइट. एंड नंबर ऑफ क्लासेस हमारे थोड़े से ऑब्वियसली यू नो कि थोड़े इंक्रीज होने हैं, राइट. सो थोड़ा सा रखें तैयार अपने आप को, राइट. संडे का भी हम लोग जो ज्योमेट्री करेंगे उसमें थोड़े से दो चीजें हैं. एक मैं टेस्ट भी आप लोगों को भेज दूंगा, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप लोग टेस्ट दे दोगे, एंड साथ में एक हम लोग जो लेक्चर है वो भी करेंगे, राइट. ओके, ओके सर. ठीक, ओके सर. बाय बाय. बाय सर. थैंक यू. बाय सर. थैंक यू सर. आगे में तब हाँ, जस्ट अ मिनट बेटा.